शरण सतत मुश्रित जन संकट हरण परम कृपा सागरा परम कृपा सागर पर सुगुण पालित जन गोपाल दासनुत पालित जन गोपाल दासनुत बिना यकालिंदु बिना ग्रो चुडगु बेरे बरुनानु विघ्नराज बिना यका. Thank you, Avni, for the soulful rendition of the invocation. I will now request all of you to kindly rise for the state anthem. Jai Bharata Janani Tanujate, Jai He Karnataka Mate, Nargit. Well, ladies and gentlemen, IMS Foundation was established in 2011, and we are all aware it's a not-for-profit charitable trust managed by renowned industry leaders. And more importantly, it's pretty active in various domains like startups, technology, agriculture, and so on. At the outset, I will request the chairman of the IMS Foundation, Shri HVS Krishna, for the opening remarks and welcome address. Divya Sajjana Swagat Kijiye Shri HVS Krishna. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಹಾಗೂ ಐಎಂಎಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸುಂದರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶ್ರೀ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ, ಆನರಬಲ್ ಚಂದನ ಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಂಶು ತ್ರಿವೇದಿ, ಆನರಬಲ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್, Shri Tejasvi Suryaji, Honorable Member of Parliament, Shri Baba Kalyani Ji, Chairman and Managing Director of Bharat Limited,
and our advisory board chairman, and Shri Arun Ramchandani ji, Executive VP Head, L&T Defense. Shri Satyin Sabnish ji, our Karnataka State President. Shri Cyril Parera ji, Managing Director of Train Exhibitors. Shri Om Prakash Gupta ji, our All India General Secretary. And Manya Shri Prakash Chand ji, our Organizing Secretary for Laghu Udyog Bharati. A very good afternoon to you all of you, because it's a great day for Laghu Udyog Bharati. We were all expecting this to happen in Bengaluru, especially Defence and Aerospace Sector exhibition in Bengaluru, and the dream has come today. Laghu Udyog Bharati Karnataka with Association of IMS Foundation is inaugurating this 3 days India Manufacturing Show 2023 in this beautiful Bengaluru International Exhibition Center. It's a great honor and privilege to me to welcome Shri Honorable Rakshana Mantri ji on this occasion as a chief guest. Welcome to you, sir. I thank Sudhanshu Trivedi ji, Honorable Member of Rajya Sabha, who was a guiding force for us to do this event, and he has helped in various stages. I welcome to you, sir. I welcome Shri Tejasvi Surya. I need not have to introduce our such a dynamic Member of Parliament from Bangalore South. Welcome to you. I sincerely thank Mr. Baba Kalyani, who is an icon of defense and aerospace manufacturing in India, and Chairman and Managing Director of Bharat Forge Limited, and also he is our Advisory Board Chairman. Welcome to you, sir. And I also welcome another icon. You must be knowing all these persons. I need not have to introduce them. Who does know about L&T? The L&T Chief Executive Head and L&T Defense Head, Mr. T. Ramchandani is here. I welcome to you, sir. I welcome my colleagues, Dr. Sachin Sabnis, President of Laghu Udyog Bharati Karnataka, Shri Om Prakash Gupta ji, our All India General Secretary, and my special thanks to Mr. Cyril Pereira, Managing Director of Train Exhibitors, and for his team. I welcome once again Shri Prakash Chandra ji, our All India Organizing Secretary, who has given the margadarshan to us always. And I also welcome Shri Vajubai Wagasia ji, who is here. He is our past National President of Laghu Udyog Bharati. We have received a very, very good technical support to organize 3 days very high-profile conferences in this occasion. So our associate partners are India Foundation. I thank and welcome all the officers of India Foundation here. We have received a great support from MSME, NSIC to conduct this exhibition. I will welcome all the officers of MSME and NSIC. We have received a great financial support from State Bank of India, Canara Bank, CDB, and all other financial institutions. I thank all the sponsors on this occasion and I welcome them. I can see several His Excellencies, Consul Generals, Honorary Councils, and all embassy leaders. I welcome all these international leaders also on this occasion. I can see a lot of delegates from various districts from our state, from Hubballi, Dharwad, Mysore, Hassan, Tumkur, and all these district places. I welcome all the delegates of Laghu Udyog Bharati. And also I can see a lot of delegates who have come all over India to witness this exhibition from various states. And I welcome all these persons from different parts of the country also. I can see several state and central government top level officials present here. I welcome all the officers here. Specifically, we have received a very, very, very good response and support from Ministry of Defense. All the 3 forces, Air Force, Navy and Army, they have given us a wonderful support
and they have participated, and they are participating in the vendor development program, B2B technology transfers, and all these things for next 3 days. They are all giving their hand. So I personally and on behalf of Lagu Udyog Bharati, I thank all the officers who are here. I also welcome our media friends who are always support to us by providing a massive coverage, and I welcome them also. I also welcome and recognize the presence of Mr. M. Krishnappa, who is our Bengaluru South Constituency member of Assembly. And also I will recognize from the Defence, Minister of Defence, Shri Amit Satija, IAS is here. I welcome you, sir. Air Marshal Vibhas Pandey is here. I welcome you, sir. Lieutenant General B.K. Respalwal, AVSM, VSM representative from Indian Army Chief is here. I welcome you, sir. Commodore Sen Gupta, representative of Indian Navy Chief is here. I welcome you, sir. Air Chief Marshal RKS Bodoria, former Air Chief Marshal is here, sir. I welcome you, sir. I do recognize that there are several very important dignitaries in this audience. Due to paucity of time, I will not be able to express individual welcome to all of you. However, I welcome all of you once again. I would proudly say India Manufacturing Show is the flagship event of Lagu Udyog Bharati from past 14 years. We have already organized very successful 5 editions, that is in 2010, 2012, 2014, 2017, 2022, and this is the 6th edition. On the earlier editions, we had a very successful industries chaired as an advisory board chairman by Sajjan Jindal ji, Sri Anand Mahindra ji, Sri Vikram Kirloskar ji, and Sri Ramdas ji. So I will remember, and because of their support only, we could able to do this exhibition to this extent. Thank you, and I welcome you, all of you, sir. This advisory board, the 6th advisory board, is chaired by none of other than our leader, Mr. Baba Kalyani ji. This particular edition is purely focused on defense and aerospace and general engineering. The main objective of this exhibition is to provide a good business opportunity to the manufacturing industries, in particular for MSMEs. With the defense and aerospace companies to make at least 25% of the offset given by the central government and to fulfill the dream of Atmanirbhar Bharat of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. We have all the 3 days very high-profile technical seminars, B2B meetings, technology transfers, vendor development programs to give value addition to all the exhibitors. Another good information I would like to share with you finally, that our happy and satisfied exhibitors are requesting us to declare the next edition of IMS in this edition itself. I am very proud to say we have already finalized our next exhibition, 7th exhibition of India Manufacturing Show during November 2025 in the same venue. This is for the information for all the exhibitors. I wish all very best to the participating companies to enhance their business opportunities. Thank you once again. Thank you, and I wish you all the very best. And I welcome all of you once again. Dhanyawad. Thank you, Mr. H.V.S. Krishna, for comprehensive and cordial welcome address and, of course, welcome remarks. At this juncture, it's my privilege to request the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji, and the dignitaries to kindly move towards the left-hand side of the stage and light the lamp to signal the inauguration of the India Manufacturing Show 2023. The traditional light
Raksha Mantri to kindly move forward and offer floral tributes to Bharat Mata. As we are all aware, this is made in India and made for the world. So let's take the blessings of Bharat Mata in this noble endeavor of Made for the World and Make in India. Thank you very much, Honorable Raksha Mantri and all the dignitaries on the dais. Well, ladies and gentlemen, at this juncture, it's time now to felicitate the dignitaries on the dais. At the outset, I would request the chairman of IMS Foundation, Shri H.V.S. Krishna, to kindly felicitate the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji. I would also thank you very much, sir, for your presence. And in spite of his busy schedule, the Honorable Raksha Mantri is here. It's indeed a matter of great privilege for us. Thank you, sir. I will also request Mr. H.V.S. Krishna to kindly felicitate the Honorable Member of Rajya Sabha, Dr. Sudhanshu Trivedi ji. बहुत स्वागत sir. Thank you very much. Also to Shri Tejasvi Surya, Honorable Member of Parliament, I request Shri H.V.S. Krishna to kindly welcome him with a bouquet and felicitate him. I would now request the President of Lagu Udyog Bharati Karnataka, Shri Sajjan B. Sabnis, to kindly felicitate all the other dignitaries. Shri Baba Kalyani, Chairman Bharat Forge Limited and Chairman of the Advisory Board. Also to the Executive Vice President and Head L&T Defence, Shri Arun T. Ramchandani. Hearty welcome to you, Shri Arun T. Ramchandani. Also to Om Prakash Gupta ji, the All India General Secretary of Lagu Udyog Bharati. And also to Mr. Cyril Pereira, who's been the man behind the show, the exhibitor one of the most leading companies in the world in terms of organizing big exhibitions all over the world. Thank you very much. Well, all of us have got a brief outline of what exactly is in store for us in the next 3 days. At the outset, I would request the President of Lagu Udyog Bharati Karnataka, Shri Sachin B. Sabnis, for the theme-setting address on the IMS show in 2023. Please put your hands together for Shri Sachin. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. All the dignitaries on the dais, Shri Rajnath Singh ji, Raksha Mantri, Shri Dr. Sudhanshu Trivedi ji, Honorable Member of Rajya Sabha, Shri Tejasvi Surya ji, Honorable Member of Lok Sabha, Baba Kalyani ji, Chairman and Managing Director of Bharat Forge, Shri Arun Ramchandani ji, Executive Vice President and Head of L&T Defence, H.V.S. Krishna ji, who has taken so much of efforts in organizing this, Chairman of our IMS Foundation, Om Prakash Gupta ji, All India General Secretary of Lagu Udyog Bharati, Shri Prakash Chandra ji, All India Organizing Secretary of Lagu Udyog Bharati, and Cyril Pereira ji, Managing Director of
foreign exhibitors, distinguished guests, invitees, all the senior officers from the armed forces, exhibitors, a very good afternoon to all of you. On behalf of Lagu Udyog Bharati and IMS Foundation, I extend a very warm welcome to all the distinguished guests present here for this Indian Manufacturing Show 2023. Lagu Udyog Bharati, as we all know, is a pan-India association with more than 44,000 members and representation in more than 27 states. Lagu Udyog Bharati in Karnataka, in association with IMS Foundation, is organizing the 6th edition of Indian Manufacturing Show 2023 in this beautiful city of Bengaluru at Bengaluru International Exhibition Center. I am happy to inform that Ministry of Defence, Government of India has extended its full support to Indian Manufacturing Show 2023. Let me have the pleasure of introducing Indian Manufacturing Show 2023 to all of you. It is a country's premier trade show for the industries, for various industries from aerospace, defense and other allied engineering industries. The key focus sectors of 6th edition of IMS, we have 5 different verticals, namely aerospace and defense, automation, robotics and drones, electricals and electronics, general engineering, energy environment and EV transportation. IMS 2023 is a unique platform for technology transfer, innovations, business meets and joint ventures to help identify potential investors to boost the industrial production, collaboration and industrial trade. During this 3-day event, concurrent conferences and vendor development programs are organized involving industry thought leaders from various DPSUs as well as private companies for the benefit of all of you. As we know, since earlier time, due to various trade pacts, the technology transfer was restricted, leading to delayed projects, especially in the defense sector. But now, with the global village concept and Atmanirbhar Bharat, self-reliance has become the concept. The principal objective of IMS 2023 is to promote this concept of Atmanirbhar Bharat, which is the key ideation and focus area of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Our Prime Minister has set a vision to make India a $5 trillion economy, a global powerhouse by 2024-25. In this context, exhibition like Indian Manufacturing Show helps vastly curate this idea and achieve this target, making our Prime Minister's dream come true. IMS 2023 intends to create this ecosystem for MSME and defense establishment for the development. I would also request, as Lagu Udyog Bharati Karnataka President, to Raksha Mantri ji to set up an testing facility, integrated testing facility for aerospace and defense, specifically for MSMEs in Karnataka. As we are, majorly MSMEs are involved, small MSMEs, and testing takes a lot of time in development of a lot of products for defense. With this small welcome note, I thank all the industry captains for taking out the precious time, that too on a very busy weekday, and to be present here for this inauguration of Indian Manufacturing Show 2023. Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, India Manufacturing Show basically showcases the latest trends, innovations, and advancements happening in the manufacturing sector in the entire world. Thank you very much, sir, for your theme-setting address. We have on stage the chairman of Bharat Forge Limited and the chairman of the advisory board, IMS 2023. So please put your hands together and let's welcome Shri Baba Kalyan.
Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Member of Parliament, Dr. Sudhanshu Trivedi ji, Honorable Member of Parliament from Bengaluru, Shri Tejasvi Surya ji, my colleague from the industry, Head of L&T's Defense, Sri Arun Ramchandrani, Chairman of the IMS Foundation, Sri S.V.S. Krishna, Chairman of Bharatiya Laghu Udyog, Om Prakash Gupta ji, Chairman of the Laghu Udyog Karnataka, Sri Sachin Sabnis, all the other members involved with the IMS, with the Laghu Udyog, present dignitaries, members from the armed forces and the services, dignitaries from abroad, invitees, media, ladies and gentlemen. I know we are quite late, so I will restrict my talk to only 5 minutes. But I want to make some 4 important points in this 5 minutes. First, the reason we are here in this IMS 2023 and specifically talking about defense and aerospace is because as a nation we have realized through a process that manufacturing industry is an important tool for economic development of this country. And manufacturing, which many of us didn't realize for the last 75 years, really comes about after we have learned the manufacturing of defense products. Now, I don't want to give you long example, but that happened in the United States, that happened in the United Kingdom, that happened in Europe, that has happened in Korea, that's happened almost everywhere in the world except those countries which were under the Marshall Plan after World War II. There's a wonderful book written by a US author called Henman, called Freedom Force, that describes how the United States built its industrial economy based on producing defense products. However, we had 3 data points which were watershed moments for India. One was December 2014, when Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji created the whole concept of Make in India through a seminar in Vigyan Bhavan with all ministries, which then got accelerated, and in between 2017 to 2020, the whole reform process that took place in the Ministry of Defense, ably led today by the Honorable Minister, Sri Rajnath Singh ji, who has given all of us, whether you are a TPSU or whether you are a private sector, a specific target that we need to achieve for India. $25 billion of industrial production in defense and $5 billion of exports. Now, it's unbelievable that this was announced by Honorable Rajnath Singh ji last year, not too long ago. And in 1 year, companies like me, like ourselves, we are now exporting complete artillery guns, complete systems that are designed, produced with intellectual property owned by India. Nothing is imported in that. Why I'm saying this is because many of you sitting here are all technocrat entrepreneurs.
Now it is the job of technocrats to develop technology, to develop products, to develop processes. 60 to 70% of manufacturing in any part of the world is done by what we currently define as the MSME sector. It's another reason that the MSME sector size and scale in many countries is much bigger than ours. In Germany, for example, the Mittelstand, which is the MSME sector, can be 1 billion euros, can be 2 billion euros, not 5 crores of rupees as it is defined in India. So we need to start thinking big. And as entrepreneurs, you need to find solutions. You cannot go every time to the government and ask for solutions. That is not entrepreneurship. The last data point is, you have heard our Honorable Prime Minister say, and many times the government say, including the Honorable Defence Minister and many other people, that we are all heading towards our Amrit Kal. Amrit Kal, you know what Amrit means and what Kal means. It's a time of prosperity. We are heading towards a time of prosperity. And it's not very far, it's 2047, when India will reach 100 years of independence. And it's the dream of every Indian that we should see ourselves as the second or the third largest economy in the world, with at least a $30 trillion sector. Now, if India is going to go from 3.3 to $30 trillion, which is almost 10 times, our manufacturing sector has to increase 20 times to make that happen. So please keep that in mind. You know, this 5 crores and 100 crores, you need to multiply that by 10 or 20 to understand what it's going to mean in the next few years. The opportunities are great. The opportunities in the defense and aerospace sector are even greater. So let's take this opportunity, let's build our businesses, let's build our industry, and along with that, let's build a very strong nation. Jai Hind. Well, ladies and gentlemen, you would agree with me that Sri Baba Kalyani has echoed the sentiments of the entire industry, thanking the Honorable Prime Minister and the Honorable Raksha Mantri for the tremendous leadership and support. Let's all thank Sri Baba Kalyani for his highly inspiring address. Thank you, sir. I would now request the Executive Vice President and Head L&T Defence, Shri Arun T. Chandana, for his address. Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Member of Parliament, Dr. Sudhanshu Trivedi, Honorable Member of Parliament, Shri Tejasvi Surya ji, Chairman Bharat Forge Limited, Shri Baba Kalyani, Chairman IMS Foundation, Shri HVS Krishna, President Lagu Udyog Bharati Karnataka, Shri Sachin Sabnis, office bearers of the Lagu Udyog Bharati, senior officials of the armed forces, members of the industry, ladies and gentlemen. It is an honor for me to be present at this show, focused on aerospace and defense and organized by the Lagu Udyog Bharati Karnataka. Such an event provides a large platform for the MSMEs in the defense and aerospace domain to showcase their capabilities and connect with the larger OEMs, the DPSUs and the end users. Under the stewardship of the Honorable Raksha Mantri, the domestic defense industry has grown and its output is expected to cross 1 lakh crores in the current financial year itself. Capital acquisition over the long-term integrated perspective plan 2012 to 2027 is estimated at over rupees 4 lakh crores
worth of opportunities for the domestic industry in this period. Sri Baba Kalyani talked about the target of 25 billion by 2025, and if this target is to be achieved, it is only possible with the support of the complete defense industrial ecosystem, predominant contribution coming from the MSMEs. If India lives in villages, then manufacturing industry lives in the MSMEs. A strong MSME sector with a large technical manpower base and improving infrastructure and logistics in the country would serve as enabling factors for excelling in defense manufacturing. Today, about 12,000 MSMEs and startups are currently supporting the DPSUs and armed forces in supplying defense equipment and providing services, particularly IT and IT-enabled services. However, we need to support them with the following means to further enhance their participation and improve the ease of doing business. These include more training, hand-holding of these enterprises, ease in testing facilities and obtaining of certifications, and facilitating the access to capital. In the Defence Acquisition Procedure 2020, there are specific reservations for orders up to 100 crores per year on MSMEs. Promotion under various schemes like the IDEX, the Technology Development Fund, and the MAKE programs encourage participation of MSMEs and startups in the development of defense products. The Public Procurement Policy 2012 has been implemented by many DPSUs, under which price preference is given to MSMEs under certain conditions. Today, to encourage startups and MSMEs to invest in defense manufacturing, 1,500 crores has been earmarked in financial year 23-24 for startup and MSMEs from the budget earmarked for procurement through domestic industry. It is apt that this show is being held in Bengaluru, the aerospace and startup capital of India, and having the top startup ecosystem globally. With 65% of India's aerospace-related exports originating from this state, the state is a preferred investor destination for aerospace and defense companies. Karnataka's strong ecosystem has blossomed with decades of presence of large DPSUs, friends whom I see here from companies like Bell, HAL, BEML. Today, the state is the home to all major global leaders like Airbus, Boeing, and others, and is home to 25% of India's aircraft and spacecraft industry. On behalf of the entire domestic defense and aerospace industry, and on behalf of FICCI that I represent as the chair of the Defense and Aerospace Committee, I wish this event a great success and look forward to great B2B interactions in this event. Thank you. Jai Hind. Ladies and gentlemen, Shri Arunti Chandani has, of course, outlined the various steps to be taken for further growth and development, and in the over a period of time, the industry will rise to the occasion. Thank you, sir, for your address. We have with us the young, dynamic, Honourable Member of Parliament, Shri Tejasvi Surya. I would request Shri Tejasvi Surya to kindly address all of us. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆಯಿಂದ
ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಇಕಾನಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾಂಶು ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ ಕಾಯತ್ತೆ ಅಂತ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ತಂದಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಂಶು ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರೇ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಭಾರತ್ ಫೋರ್ಜ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಬಾಬಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅವರೇ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಅರುಣ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ IMSನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ HVS ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, I am extremely happy that the IMS 2023 is taking place in Namma Bengaluru. Perhaps there couldn't be a better city, a better state to embody the spirit behind the IMS 2023 show than the progressive state of Karnataka and the dynamic, vibrant city of Bengaluru. It gives me immense joy to bring it to the notice of our Honorable Raksha Mantri that our state contributes 65% of the total defense supply in the country. And Rajnath ji, the technocrats, the MSME leaders who are present here in this auditorium, they are the ones who are leading this revolution of creating prosperity, skilled manpower, and bringing the name to Bengaluru as the city which is leading India's defense manufacturing. A big round of congratulations and thank you to all of you present here. Compared to the doyens on the stage, both in terms of experience as well as study, I am very junior. But I want to share only 2 experiences that I have encountered personally over the last 4 years, which is a testament, an indication to the massive transformation in governance that the country has witnessed, especially related to defense manufacturing and MSME manufacturing, that I myself have experienced as the Member of Parliament representing Bengaluru. The very few days after I got elected, I remember this very vividly. Early days of 2019, just after the Lok Sabha elections had gotten concluded and Narendra Modi ji had become the Prime Minister, there was a large delegation of employees from HAL who came and visited me at my office. Along with them were many MSMEs who were suppliers, have been legacy suppliers for HAL, who came and met me. Their grouse was only one thing. In one sentence they said, "Sir, HAL is a legacy institution of Karnataka and Bangalore. It was started even before independence. The Maharaja of Mysuru had the foresight to manufacture aeroplanes in India, and he had partnered with Chandana and had provided for 600 acres of land in Bengaluru. For over so many decades, this institution has provided livelihood to lakhs of people in Bengaluru. Thousands of small, medium manufacturing enterprises are depending on the survival of HAL, but HAL is dying." These were the very words, HAL is dying. Early 2019. A few months later, the Honorable Prime Minister announced the Make in India scheme, and our own HAL got a 48,000 crore rupee order to manufacture LCA Tejas.
Today, HAL's order book is healthy, and HAL's ambitions is today not just restricted to our domestic supply, but the chairman of HAL tells me that HAL wants to conquer the daunting European market as well. This is one story. HAL is not just manufacturing LCA Tejas. Just a few months ago, the Honorable Prime Minister came to Tumkur and launched the manufacturing unit to produce the advanced light combat helicopters as well. From an industry and institution which was on the verge of facing death, our government has transformed HAL to be rightfully the pride of this country, and this is the transformation that Narendra Modi government has brought. I'll give you one more example. A month or two ago, I was taking the flight to Delhi. And while I was boarding, a youngster shouted my name and ran all the way towards me and said, "Bhai sahab, 1 minute chahiye." He wanted a minute to, and I asked, "What is it?" He said, "Sir, आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं." I said, "क्या हो गया?" He said, "I come from Indore. A few years ago, a few of my friends and I started a defense startup in Bengaluru. Last year, we applied for grants from the IDEX platform. We did not approach any government officer. We did not go to any officer in Delhi. We did not meet the minister. We did not do anything that was required to fast forward our application. But just 2 months ago, we received a 22 crore rupee grant to support our innovation." These two experiences, the transformation of HAL and the unleashing of the entrepreneurial energy in the defense ecosystem, is a story of Amrit Kal, a story of New Bharat. Out of the 85 recognized IDEX startups, more than 30 of them are in Bengaluru and Karnataka. And it's our boys in their early 20s, late 20s, who are innovating and starting this revolution. I want to thank Rajnath ji, and through him, the government of India, for coming to the rescue of our MSMEs during the COVID pandemic. राजनाथ जी, ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है, बेंगलुरु में, सिर्फ बेंगलुरु शहर में, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3.59 lakh accounts belonging to MSMEs have got 16,720 crore rupees in support during the COVID pandemic. Baba Kalyani ji was speaking about our intention to dream big. One of the schemes that Rajnath ji has introduced as the defense minister, especially with an aim of supporting defense startups, the name of the scheme itself is called Dare to Dream. This is the culture that this country is fostering today under the leadership of Rajnath ji. In conclusion, I only want to say this. The MSME sector for a very long time was neglected in this country, and the policy ecosystem, more than incentivizing growth, incentivized our institutions to remain small and remain pygmies. This resulted in a very precarious situation where our entrepreneurs running MSME institutions
preferred to remain small and micro than becoming big and gigantic. And I remember Laghu Udyog Bharati meeting me and meeting multiple MPs across the country to change the very definition of micro industries and bring the legislation changes, statutory changes, and it was because of the large efforts of Laghu Udyog Bharati that we have seen a positive transformation in the legislative and policy sphere. Today, MSMEs are being recognized and rewarded to become big and to not remain stagnant and small. Even as we say that there has been a lot of reforms, there still remains a lot of challenges in accessing skilled manpower, in accessing better finance, to ease regulatory compliances, and I am sure that all of these challenges will be very effectively met with positive response, because the government is not only sensitive and nimble, but it is committed to a large vision of making India the manufacturing hub of the world. I want to thank Rajnath ji on behalf of all of you for taking time out from his busy schedule, having come to Bengaluru to support us, to encourage us, and I can assure him, if the government of India gives 10 rupees to Bengaluru, Bengaluru will give back 100 rupees to the country. Thank you so much, Rajnath. Well, indeed, ladies and gentlemen, India is making rapid strides towards transformation from a developing nation to a developed nation, and Bengaluru, Karnataka is immensely contributing towards it. Thank you, Shri Tejasvi Surya, for that eye-opener. Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, Dr. Sudhanshu Trivedi has been a tremendous support towards the organizing of the India Manufacturing Show 2023, and it goes without saying that we are all eager to listen to his words. So please put your hands together for the Honorable Member of Rajya Sabha, Dr. Sudhanshu Trivedi. Distinguished dignitaries on the dais, one of the most respected politician in the contemporary politics of India, Raksha Mantri of Bharat, Shri Rajnath Singh. You have just heard him, a promising leader in making, a young member of Parliament of Bengaluru, dear friend Tejasvi Surya ji. Shri Baba Kalyan ji, Shri Arun Ramchandani ji, H.V.S. Krishna ji, the Sutradhar of this program, Shri Om Prakash Gupta ji, Shri Sachin Sabnis ji, Shri Cyril Pereira ji, various officers of the Government of India, various leaders of the industry, young entrepreneurs, and ladies and gentlemen. You have already heard that what Tejasvi Surya ji was telling about Bengaluru. When we are here in Bengaluru for this Laghu Udyog Bharati program for the defense industries, definitely there cannot be a better place, because I remember when in 2008, I was there in US, in the US government's Young Leader program, which is called American Council for Young Political Leaders, when Barack Obama was running for his presidency for the first time. It was in North Carolina, he was giving a speech. You know what was the text of the speech, sentence? He was saying to Americans that we have to make our children work hard because they have to compete with Bengaluru and Beijing. And I remember in July 2013, I was in US when President Raksha Mantri Shri Rajnath Singh ji was BJP president, and we were part of he was leading a BJP delegation. At the time when we went there, met so many senior members of parliament, ministers, think tanks and others, they were having a gloomy picture of the country. And the impression dominating there was that the success story of India is over. Then Shri Rajnath Singh ji assured them, no, the success story of India is not over. Success story of India is waiting for BJP under the leadership of Shri Narendra Modi to come into power. And you have seen what happened after 2014, as Baba Kalyani ji was telling, some
epoch-making decisions were taken in 2014, and I think there are certain type of words which the government takes they fall in three categories. One, the works that the previous government was doing, and our government is also doing. Second, the previous government, this like building roads, infrastructure and others, but we are doing with much better scale and other things. Second, they were thinking, but they couldn't, like GST and the Women Reservation Bill. But third category is those type of work which they never, either they have not thought of or they don't want to. That was the biggest paradigm shift which the Modi government has brought in the field of defense production. Because even prior to our government came, we were capable of making the missiles, but were not capable of making the assault rifles. Does this thing sound logical? We were capable of making satellites, but not capable of making the planes. It means there was a dire need of policy which is being shifted, and it shifted to which position? I would like to remind, in April 2019, just before when the elections were going on for 2019 Lok Sabha, if you remember, in the morning a message came that Prime Minister is going to address the nation at 12 in the noon. सब लोग घबरा गए, पता नहीं क्या होने वाला है. Magar, if you remember, what Prime Minister announced? He has announced that India has got the capability to hit any object moving in the lower orbit of Earth. Now you can say, is this that much of importance that Prime Minister should come and announce? Yes, because in case of war, if any satellite is there in the lower orbit of Earth, we are having the precision capability, and we are just the fourth country in the world to have this capability. And now, again I am coming here, this place of Bengaluru, when Sri Rajnath Singh ji is Raksha Mantri, this year, in February 2023, when the Defense Expo taken place, 32 countries, Defense Minister of 32 countries were here. This was not just the biggest organization or program of India, but this is for the first time in the world that outside Europe and America, the Defense Minister of 32 countries are there. So that is the paradigm shift from where we have started in 2014 and we are coming here. And as Baba Kalyani was telling that around more than 60% the outcome of the defense production is definitely has to be dealt with by MSMEs and others. As far as MSME is concerned, our government has tried to change the definition. We have also taken a policy decision that any tender of 200 crores or less will not be a global tender, so it should not be that the medium and small industries have built up all their capabilities and suddenly an international player has come. So, government is fully aware of the responsibilities and how to make up these medium and small industries to grow, and definitely in the time to come, when our government came, our export of the defense was nearly 600 crores, now it is 16,000 crores. So there is an enormous opportunity, and we also believe, कभी-कभी राजनाथ सिंह जी से बात होती तो एक बात मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री के लिए कहते हैं. There is a famous couplet in Hindi. I will also translate in English. It says, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डाल, जहां काम आए सुई काह करे तलवार. It means just looking at the small one, don't discard the small one, just looking at the big one, because the work which needle can do, the sword cannot. So definitely these MSMEs are going to contribute in equal proportion what the big industries can do. And lastly, I would like to say, as Prime Minister has said in the last 15th of August, that this is Amrit Kal, which is being referred. It's a time of 25 years, and he said that these 25 years will lay down the foundation which will pave the way for 1,000 years. Can anybody think of 1,000 years? We are the only country in the world which think of 5,000 years back and 1,000 years ahead. Because we are not just the biggest country, we are not just the youngest country, but we are the oldest country in terms of civilization.
and we are all set to become a richest country. One of the report I have seen that $30 trillion may be the Indian economy size by 2047. So whatever he said, yahi samay hai, sahi samay hai. So the time of India has arrived, and it is the time. And finally, I would like to remind, I've started from the importance of Bengaluru and concluding there. Bengaluru was the first city outside Europe and America in 1902 who has provided street light in a city. So first city outside Europe and America. So I think it is called the intellectual capital of the country. It should definitely pave the way, a new life to the street of development of country. तो सिर्फ ये कह के बात समाप्त करता हूं कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है. धन्यवाद. Well, ladies and gentlemen, Dr. Sudhanshu Trivedi, of course, Bengaluru is the IT city, BT city, but he has predicted that Bengaluru will be the development capital of the country. So let's give a round of applause for his words of encouragement. Thank you, sir. At this juncture, I would request the Honorable Raksha Mantri to kindly release the exhibitors directory before his speech. The exhibitors directory will give us a comprehensive overview of the various information about the exhibitors who are indeed the part and parcel of India Manufacturing Show 2023, their manufacturing capabilities, the idea of which they will contribute to the economy of this wonderful nation. And this directory is something like a book which gives us all the details, and a very important book. Let's all give a round of applause for the dignitaries for the release of this all-important exhibitors directory. Thank you very much, Honorable Raksha Mantri, for the release. And now, it's my privilege to request the Honorable Raksha Mantri for his keynote address. Devi of Sajjanov, please put your hands together. और स्वागत कीजिए श्री राजनाथ सिंह जी. Very renowned intellectual of my country, Dr. Sudhanshu Trivedi, Member of Parliament, and a very dynamic, as you heard few minutes before, and who speaks in Parliament very well, Dr. Sri Tejasvi Surya, Chairman and Managing Director, Bharat Forge Limited, Baba Kalyani ji, Executive Vice President, Head, Lawson and Tour Relations, Arun Ramchandani ji, Sri S.V.S. Krishna, Chairman, IMS Foundation, Sri Om Prakash Gupta, All India General Secretary, Laghu Udyog Bharati, Sri Sachin Sabnis, President, Laghu Udyog Bharati, Cyril Pereira, MD, Touring Exhibitors, सारे यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, सीनियर ऑफिसर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और डिफरेंट एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिशियंस, मेरे मीडिया के मित्रों, यमन्य देवियों व सज्जनों, बेंगलुरु में हूँ, इसलिए एल्लरिगू नमस्कार गल्लो. बेंगलुरु बंदरेवुदु Santosh Tandide. My pronunciation is correct. Kannada Rajyotsava Shubhash Yagalo. Brothers and sisters, neither I will speak in English nor Hindi, but I will speak in English. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लघु भारती को कि आपने
लघु उद्योग भारती कर्नाटका और IMS फाउंडेशन के फ्लैगशिप इवेंट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो के इस एडिशन में मुझे आपने इनवाइट किया है। आप सभी स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कंटिन्यूअसली जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन दोनों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि लघु उद्योग भारती अब लघु नहीं रहा, यानी अभी स्मॉल नहीं है। यह लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार विशाल बनता जा रहा है, बड़ा बनता जा रहा है और लगातार फल फूल रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने लगभग समस्त भारत में अपनी प्रेजेंस कायम की है और जिस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्टैब्लिशमेंट के समय से ही स्मॉल इंडस्ट्री के हक में अलग अलग समय में आवाज उठाई है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, एडमिरेबल है। निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती को इस रोल की इंस्पिरेशन RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्राप्त हुई है। कहा गया है अहर्निशम सेवामय, यानी सेवा में सदैव लगे रहने की भावना के साथ संघ परिवार पिछले लगभग 100 सालों से सोसाइटी और नेशन की सेवा में लगा हुआ है। नेशन फर्स्ट की यह स्पिरिट होल हार्टेडली और फुल डिवोशन के साथ RSS के लोग लगभग एक सेंचुरी से काम कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वयं ही लंबे समय से संघ परिवार से जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ हूं और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं जुड़ा रहूंगा। इसलिए मुझे मालूम है कि नेशनल सर्विस की सेंटिमेंट और डेडिकेशन हम सबको RSS से मिली है। साथियों, कर्नाटक में आना, स्पेशली बेंगलुरु में आना, मेरे लिए हमेशा एक खुशी का क्षण होता है। इट इज ए मोमेंट ऑफ द हैप्पीनेस फॉर मी। कर्नाटक संत श्री बसवन्नाथ का बर्थ प्लेस है, इसलिए इस स्टेट का एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन जिस प्रकार से इस स्टेट में और यहाँ के लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में प्रोग्रेस की है, वह वाकई इनक्रेडिबल है। और कर्नाटक की इस प्रोग्रेस में बेंगलुरु के कंट्रीब्यूशन को किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। बात केवल कर्नाटक की ही नहीं है, बल्कि पूरे कंट्री की है। मेरे हिसाब से दिल्ली अगर पॉलिटिकल कैपिटल है, बेंगलुरु देश का टेक्नोलॉजी कैपिटल है। मुझे जब भी बेंगलुरु आने की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं इस अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाने की मैं कोशिश करता हूं। साथियों, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो के माध्यम से मैं भारत की और विशेष तौर पर साउथ इंडिया की रिच इकोनॉमिक लेगेसी को देख पा रहा हूं। भारत का सदर्न पार्ट हमेशा से प्रॉस्परस रहा है। यदि मैं आपसे एंशियंट टाइम्स की बात करूं तो आप सब दक्षिणापथ के नाम से जरूर परिचित होंगे और हमेशा से साउथ इंडिया प्रॉस्पेरिटी से सिनोनिमस रहा है। सातवाहन, चेर, चोल और पांड्य राज्यों की फिनोमिनल प्रॉस्पेरिटी से साउथ इंडिया का इतिहास भरा पड़ा है। न सिर्फ एंशियंट टाइम बल्कि मेडिवल टाइम में भी साउथ इंडिया अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता रहा है। न केवल इकोनॉमिक बल्कि कल्चरल वे में भी साउथ इंडिया प्रॉस्परस रहा है। अपनी जियोग्राफिकल कंडीशंस के कारण साउथ इंडिया तो हमेशा से इन्वेडर्स के लिए एक डिस्टेंट टारगेट रहा। और सभी जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया को इन्वेडर्स का सीधे सामना करना पड़ा था, जिस वजह से अलग अलग समय पर अलग अलग इन्वेडर्स ने नॉर्थ इंडिया में हमारे कल्चर को डैमेज करने की कोशिश की। लेकिन दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया इन्वेडर्स से कंपैरेटिवली कम अफेक्टेड रहा, जिसका रिजल्ट यह था कि हमारी इंडियन कल्चर साउथ इंडिया में कहीं अधिक वाइब्रेंट दिखाई देती है। दक्षिण भारत ने इंडियन कल्चर को जिस प्रकार से प्रिजर्व किया है और निखारा है, उसकी जितने भी प्रशंसा की जाए वह कम है।
साथियों, राष्ट्र की कल्चरल हेरिटेज को सिक्योर रखने के लिए मैं दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया को भारत का एक कल्चरल फोर्ट्रेस मानता हूं, सांस्कृतिक दुर्ग मानता हूं। और साथ ही साउथ इंडिया इंडियन कल्चर का एक सेफ हाउस भी है। वर्तमान समय में भी भारत का सदर्न पार्ट जिस प्रकार से भारत के मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उससे हम सभी अच्छी तरह फेमिलियर हैं। आर्ट हो, लिटरेचर हो, कल्चर हो, सिनेमा हो या ज्ञान विज्ञान यानी नॉलेज एंड साइंस हो, साउथ इंडिया ने इन सबके डेवलपमेंट के जो नए डायमेंशंस गढ़े हैं, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। और मित्रों, हम जानते हैं कि सनराइज ईस्ट में होता है, भारत के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सनराइज होता है। इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि भारत में यदि दिन का सूर्य या कहें प्रकाश का सूर्य भारत के ईस्ट में उगता है, तो डेवलपमेंट और साइंस का सूर्य भारत के साउथ में उगता है। आज यहां आप सबके बीच आकर मुझे इंडस्ट्री के बड़े समूह से मिलने और बातचीत करने का अवसर मिला है। वैसे तो मैं कई वर्षों से इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से बराबर बातचीत करता रहता हूं, बाबा कल्याणी जी सब सारे लोग यहां पर बैठे हैं। लेकिन मैं जब भी आप लोगों से मिलता हूं, मेरे लिए वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें मुझे इंडस्ट्री और ग्रोथ रियलिटी के बारे में जानकारियां मिलती हैं कि वाकई में इस सेक्टर में कहां पर क्या हो रहा है, इस संबंध में एक डिटेल जानकारी मिलती है। और आज जब मैं यहां आप सबके बीच मौजूद हूं, तो मुझे इस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बैकबोन यानी स्मॉल इंडस्ट्री, मैं भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बैकबोन मानता हूं स्मॉल इंडस्ट्री को। यह स्मॉल इंडस्ट्री पर बातचीत करने का मुझे अवसर मिला है, इसलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हुए आपसे स्मॉल इंडस्ट्रीज की स्थिति और नेशनल डेवलपमेंट में के रोल पर यहां पर कुछ बातें रखना चाहूंगा। साथियों, किसी नेशन के डेवलपमेंट में वहां की इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। जब भी इंडस्ट्रीज का जिक्र होता है, जब भी इंडस्ट्री की चर्चा होती है, तो दो तरह से सोचने वाले लोग सामने आते हैं। पहला ग्रुप तो वैसे लोगों का है जो इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट इंडस्ट्री के रोल को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसे एक्नॉलेज नहीं करते हैं। लेकिन एक ग्रुप है जो प्राइवेट इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये न सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री को नेगेटिवली देखते हैं, बल्कि ऐसे लोगों का यह भी बेसलेस एलिगेशन होता है कि ये प्राइवेट इंडस्ट्री सिर्फ सेल्फिश मोटिव्स के आधार पर ऑपरेट होते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं वो सेल्फिश मोटिव और प्रॉफिट मोटिव के बीच की जो फाइन लाइन है, उसके बीच के अंतर को, उसके बीच के डिफरेंस को शायद वो समझते नहीं है। वो लोग इकोनॉमी की साधारण सी समझ नहीं रखते हैं, यह मैं साफ तौर पर दो टूक शब्दों में कहना चाहूंगा। प्राइवेट इंडस्ट्री यदि प्राइवेट मोटिव पर काम नहीं करेंगी तो वो इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे पाएंगे, वो सोसाइटी के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट कर पाएंगे। प्राइवेट इंडस्ट्री का प्रॉफिट भारत के करोड़ों परिवारों तक जाता है, जिससे इस देश की इकोनॉमी संचालित होती है। यदि यह सेल्फिश मोटिव होता तो यह दूसरों के लॉस की कीमत पर, लेकिन यह तो प्रॉफिट मोटिव है जो दूसरों के वेलफेयर के साथ आ रहा है। साथियों, प्राइवेट इंडस्ट्री जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वह सोसाइटी में लौट कर जाता है। इसलिए मैं वैल्यू क्रिएट करने वाली इंडस्ट्रीज को, प्रॉफिट कमाने वाली इंडस्ट्रीज को राष्ट्र की सेवा में लगे हुए इंस्टीट्यूशन, संस्थानों की तरह मैं देखता हूं। प्रॉफिट के बारे में मैं अपने इंडस्ट्रियल फ्रेंड से यह कह सकता हूं कि प्रॉफिट इज नॉट सेल्फिश, प्रॉफिट इज लेजिटिमेट
साथियों, अगर स्मॉल इंडस्ट्री की बात करें तो आप सभी को यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज को मैं हमारी इकोनॉमी की मोटर कहूं तो यह कहना भी एग्जैजरेशन नहीं होगा। जितनी तेज मोटर चलती है हमारी इकोनॉमी की गाड़ी उतनी ही तेज भागती है। भारत तो एंशिएंट टाइम से ही स्मॉल इंडस्ट्री पर बेस्ड रहा है। भारत यदि एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाता था तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि भारत के विलेजेस और टाउन्स में अनेक स्मॉल इंडस्ट्रीज थी जो उस विलेजेस और टाउन्स के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी, प्रोवाइड करती थी और वहां की नीड्स को वो पूरा भी करती थी। एंशिएंट टाइम्स में भी आप देखें तो भारत में कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के उदाहरण नहीं मिलते हैं, बल्कि वे स्मॉल इंडस्ट्रीज ही थी जो विलेजेस और टाउन्स में पाई जाती थी पहले। और आप में से जिनका इंटरेस्ट हिस्ट्री में होगा वो जानते होंगे कि भारत में इंडस्ट्रियल सिचुएशन और पॉसिबिलिटीज का जायजा लेने के लिए अंग्रेजों ने 1916 में इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन यह गठित किया था। इस कमीशन का पर्पज यह दिखाना था कि इंडस्ट्रीज के संबंध में भारत कितना बैकवर्ड है, यह अंग्रेज साबित करना चाहते थे। और अप्रॉक्सिमेटली 300 पेजेस की एक अपनी रिपोर्ट कमीशन यह दिखाने में काफी हद तक सफल भी रही है। फिर भी एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इससे जुड़ी हैं जिसे मैं ब्रीफली आपके सामने यहां पर रखना चाहूंगा। पहली तो यह है कि देश को इंडस्ट्रियल रूप से बैकवर्ड बताने के क्रम में भी वे इसका गोल्डन पास्ट बताने से खुद को नहीं रोक सकेंगे। रिपोर्ट के फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट पैरा की फर्स्ट लाइन में वे यह बात लिखते हैं जिसे मैं यहां एग्जैक्टली आपके सामने रिपीट करना चाहूंगा। वे लिखते हैं, एट ए टाइम when the rest of Europe, the birthplace of modern industrial system, was inhabited by uncivilized tribes, India was famous for the wealth of her rulers and for the high artistic skill of her craftsmen. And even at a much later period, when merchant adventurers from the West made their first appearance in India, the industrial development of this country was at any rate not inferior to that of the more advanced European nations. वो खुद लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में, यानी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम का जन्मदाता वेस्ट यूरोप जब ट्राइब्स के रूप में अपनी अनसिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस में था, उस समय भारत अपनी प्रॉस्पेरिटी और अपने क्राफ्ट्समैन के हाई आर्टिस्टिक स्किल के कारण दूर दूर तक बहुत ही फेमस था। यहां तक कि बहुत बार तक जब पश्चिमी व्यापारियों ने अपना कदम यहां रखा, उस समय तक भी किसी भी स्तर पर भारत का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अति आधुनिक यूरोपीय राष्ट्रों से कम नहीं था। यह था हमारा भारत साथियों। और भारत की इस महानता के पीछे हमारी स्मॉल इंडस्ट्री का एक मेजर रोल था। और दूसरी बात, कमीशन के इस रिपोर्ट के जवाब में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लगभग 50 पेजेस का एक इंडिपेंडेंट नोट भी लिखा। इसमें आर्गुमेंट्स और ब्रिटिश स्कॉलर्स के ही दिए फैक्ट्स से उन्होंने यह याद दिलाया कि भारत प्रारंभ से ही इंडस्ट्री और ट्रेड के क्षेत्र में विश्व की लीडिंग कंट्रीज में से एक रहा है। उन्होंने 3 इंडस्ट्रीज के नाम मिलाए जिनके लिए भारत पूरी दुनिया में जाना जाता था। वह 3 एरियाज थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। ये सभी एंशिएंट टाइम में हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी की एक आइडेंटिटी थी, ये पहचान थे और स्मॉल इंडस्ट्री का इसमें मेजर रोल था। आज जब मैं लघु उद्योग भारती के माध्यम से देश के अनेक लघु उद्योगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूं
तो मुझे हमारे देश का वही प्राइड फिर से वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यानी हम अपने इसी विजन, अप्रोच और गति के साथ मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं है जब हम फुल सेल्फ रिलायंस के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आएंगे। साथियों, देश की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्मॉल इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। इस ग्राउंड रियलिटी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। स्मॉल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस इस बात में देखी जा सकती है कि इनकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत ही अधिक होती है, अर्थात एक निश्चित लेवल की इन्वेस्टमेंट पर स्मॉल इंडस्ट्री लार्ज इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के अलावा स्मॉल इंडस्ट्री लार्ज इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में समाज में वेल्थ का ज्यादा इवन क्रिएशन तो करती हैं, इवन डिस्पर्सन भी इंश्योर करती है। इसके अतिरिक्त हमारी कई एमएसएमई एक्सपोर्ट भी अच्छा कर रही हैं और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में ग्लोबल सप्लाई चेन का हमारी स्मॉल इंडस्ट्री पार्ट भी बन रही है। साथियों, हिंदी में है कि आप सब ने एक रहीम का दोहा सुना होगा, रहीमन देख बड़े को लघु नदी की डाल। बड़े को देखकर छोटों को छोड़ नहीं देना चाहिए। जहां काम आवे सुई, जहां निडिल का काम होता है, कहां करे तलवार, जहां काम निडिल का है वह काम स्वॉर्ड नहीं कर सकता, यानी तलवार नहीं कर सकती। मतलब हर चीज का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। यदि आपके पास कोई बड़ी महंगी वस्तु आ गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास जो पहले से छोटी वस्तु थी उसका इंपॉर्टेंस कम हो गया अथवा कम हो जाएगा। हर वस्तु का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। जहां निडिल काम आ सकती है वहां निडिल, और यानी निडिल ही काम आएगी, तलवार यानी सोर्ड यह काम नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार हैवी इंडस्ट्रीज का अपना एक इंपॉर्टेंस है। हैवी इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। वह भी देश के डेवलपमेंट में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको इग्नोर करके नेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं। इस सच्चाई को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। एक और बात मैं एक बात पर और आपका ध्यान आपने दिया होगा कि लार्ज इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में स्मॉल इंडस्ट्री आसानी से चेंजेस को, जो भी चेंजेस होते हैं उनको एडॉप्ट कर लेते हैं। इनकी यही एडॉप्टेबिलिटी इन छोटे उद्योगों में इनोवेशन की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाती है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जायंट इंडस्ट्रीज के पास कैपिटल तो होती है, लेकिन उनके अंदर नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने का उतना स्कोप नहीं होता है जितना स्मॉल इंडस्ट्रीज के पास होता है। इसलिए कई बार न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड बिजनेस मॉडल्स के मामले में स्मॉल इंडस्ट्री लार्ज इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा अधिक इनोवेशन ले आती है। इसके साथ ही स्मॉल इंडस्ट्रीज राष्ट्र की इकोनॉमी को स्टेबिलिटी भी देते हैं। मान लीजिए यदि किसी देश में 3-4 की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और उनमें एक या दो कंपनीज में कोई प्रॉब्लम आ गई तो मानिए कि लगभग आधी इकोनॉमी बेहद फ्रेजाइल सिचुएशन में आ जाएगी। लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री के साथ ऐसा नहीं है। छोटे उद्योग 3-4 की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में होते हैं, और यदि अनफॉर्चुनेट स्थिति में उनमें से 2-4 उद्योगों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता भी है तो उससे नेशनल इकोनॉमी पर कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ता है। यह स्मॉल इंडस्ट्री की प्रेजेंसी है जिससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहती है। दुनिया भर की वोलेटिलिटी
अनस्टेबिलिटी से यदि हमारा भारत कम प्रभावित होता है तो उसके पीछे एक कारण हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज भी है। साथियों, यहां मैं ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट E.F. सुगाकर द्वारा लिखी हुई पुस्तक स्मॉल ब्यूटीफुल, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, की चर्चा यहां विशेष रूप से करना चाहूंगा। इस पुस्तक की थीम है ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज इफ पीपुल मैटर। और साथियों, ऐसा ही होना चाहिए, पीपुल शुड मैटर। हमारे हर डिसीजन का इवैल्यूएशन इस आधार पर ही होना चाहिए कि वह ह्यूमन सेंट्रिक है या नहीं है। इस पुस्तक में कई वैल्यूएबल लेसन्स हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं, और इस बुक के प्रिंसिपल्स को देखें तो स्मॉल इंडस्ट्री इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। सामान्यतः पूरी दुनिया में बिगर इज बेटर के कंसेप्ट को अच्छा समझा जाता है। यह माना जाता है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी जितनी बड़ी होती जाएगी इकोनॉमी के लिए वह इतना ही फेवरेबल इंडिकेशन है। लेकिन शूमाकर ने अपनी इस बुक के माध्यम से बताया है कि इकोनॉमी में स्मॉल एंटिटी बिगर एंटिटीज के कंपैरिजन में ज्यादा इंपैक्टफुल होती है। इसे आप इकोनॉमी की गांधीयन फिलॉसफी से भी जोड़कर आप देख सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, गांधी जी ने भी हैवी इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में स्मॉल इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान देने के लिए लोगों को इनकरेज किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज के पास बड़े उद्योगों की तुलना में लोकल कम्युनिटी से कहीं अधिक स्ट्रांग कनेक्शन होता है। लोकल कम्युनिटी से ज्यादा स्ट्रांग कनेक्शन होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज का। उनका प्रोडक्शन स्केल भले ही छोटा होता है, लेकिन वह लोकल नीड्स और रिक्वायरमेंट से ज्यादा बेहतर ट्यूनिंग में होते हैं। साथियों, ऐसा नहीं कि स्मॉल इंडस्ट्री हमेशा स्मॉल इंडस्ट्री ही रहेंगे। आप बड़े उद्योगों को भी देखें तो आज अगर कोई जायंट इंडस्ट्री है जिसका थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का टर्नओवर है, वह भी किसी न किसी समय पर स्मॉल इंडस्ट्री ही थी। यानी लघु उद्योग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के यूथ होते हैं, और इसलिए यूथ की तरह ही इनमें एनर्जी, इनोवेशन और कुछ नया करने की कैपेबिलिटी और पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। इसलिए आप इस बात को गांठ बांध कर देख लीजिए कि कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इस देश के डेवलपमेंट में जो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है उसे किसी भी तरह से डिनाई नहीं किया जा सकता है। आप भारत की इकोनॉमी के बैकबोन हैं जो लोग यहां पर बैठे हैं। साथियों, स्मॉल इंडस्ट्री की इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए जब से हमारी गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आई है, तब से हमने स्मॉल इंडस्ट्रीज पर जितना अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, ध्यान देने की कोशिश की है। देश की सेवा का अवसर मिलते ही जिन एरियाज में हम लोगों ने सबसे पहले कदम आगे बढ़ाया, हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स का अपलिफ्टमेंट, उनमें एक था। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में उन्होंने मुद्रा स्कीम लॉन्च की। इसके तहत हमने एमएसएमईज को कोलेटरल फ्री लोन देने का प्रोविजन किया था, और इससे हमने ये इंश्योर किया कि क्रेडिट कंस्ट्रेंट के चलते हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज को किसी प्रकार का कोई डिसएडवांटेज न होने पाए। कोविड की अनफॉर्चुनेट एपिडेमिक के दौरान, जिसकी भी मिस्टर तेजस्वी सूर्या चर्चा कर रहे थे, जब दुनिया भर में इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी, उस समय हमारी सरकार ने माइक्रो ने स्मॉल इंडस्ट्री के लिए करोड़ों रुपए का एडिशनल क्रेडिट लोगों को उपलब्ध कराया था। और उस समय ऐसा करना हमारे लिए कोई आसान काम नहीं था, बल्कि बहुत ही मुश्किल काम था। बहुत से लोन्स के डूब जाने का भी यह खतरा बना हुआ था, पर हमने अपने स्मॉल इंडस्ट्रियल्स के लिए इसका खतरा उठाया। इस रिस्क को हमने उठाने में रंच मात्र भी हेजिटेट नहीं किया,
और हमने इस बात पर भी जोर दिया कि सारे खतरे एक तरफ और हमारे इंडस्ट्रीज का वेलफेयर एक तरफ, और इस दिशा में हम आगे बढ़े। साथियों, एमएसएमईज के लिए क्रेडिट के इजी एक्सेस को एनेबल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा 59 मिनट्स लोन पोर्टल की भी उस समय शुरुआत की गई थी। इस 59 मिनट्स लोन पोर्टल के बारे में भी आपको अच्छी तरह जानकारी होगी। इसके अतिरिक्त 2018 से ही हमने सरकार के सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के लिए भी इस बात को कंपल्सरी कर दिया है कि वह कम से कम 25% तक की परचेज एमएसएमईज के ही माध्यम से करें। और हमारे यंग इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टार्टअप्स के लिए हमने देश में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जैसा पहले मैं दावे के साथ कह सकता हूं कभी नहीं रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज देश में 1 लाख से अधिक संख्या में हमारे स्टार्टअप्स हैं और उसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स का नंबर हो गया है। ऐसे अनेक प्रयास हमने स्टार्टअप और छोटे उद्योगों की जीवंतता को बनाए रखने के लिए किया है। डिफेंस सेक्टर की यहां तक बात है, एमएसएमईज के लिए हमने कई अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स लिए। हम पहली ऐसी सरकार हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की जिसने वेपन्स के इंपोर्ट के लिए खुद पर ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि वेपन्स का इंपोर्ट हम जितना कम से कम होगा वो करने की हम कोशिश करेंगे। माने वेपन्स के इंपोर्ट के लिए अपने पर ही हमने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए। हमने 5 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी की जिसके तहत 509 इक्विपमेंट ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अब होगी तो केवल भारत में होगी, भारत की धरती पर होगी, भारतवासियों के हाथों से होगी। इसके अतिरिक्त हमने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए भी 4 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी की है जिसके तहत 4666 ऐसे आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही होगी और हमारे देशवासियों के हाथों से ही होगी। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी स्टार्टअप के माध्यम से न्यू आइडियाज को भी इनवाइट किया है। आइडियाज, इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को इनकरेज करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्री का एक ऐसा ही डिफेंस इंडस्ट्री हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री का एक ऐसा ही इनोवेटिव स्टेप है। इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री तीनों सर्विसेज एवं डीपीएसओ के प्रॉब्लम स्टेटमेंट आम जनता के सामने सॉल्यूशन के लिए वो जारी करता है और इसमें सेलेक्ट किए गए प्रोजेक्ट्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फंड और गाइड भी करती है। इसमें दिए जाने वाले ग्रांट का अमाउंट अब तक 1.50 करोड़ तक हुआ करता था। मित्रों, मैंने एक मीटिंग की और अधिकारियों से इस ग्रांट को कुछ और बढ़ाने के लिए कहा। सभी ऑफिसर्स ने अपने अपने अनुसार कुछ थोड़ा बहुत ग्रांट्स बढ़ाने की बात तो कही। किसी ने यह नहीं कहा कि ग्रांट नहीं बढ़नी चाहिए, तब कहा कुछ बढ़ा देना चाहिए, थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। किसी ने 2 करोड़ तो किसी ने 3 करोड़ तक बढ़ाने का प्रपोजल दिया। मैंने सोचा कि जो यूथ हमारे देश के लिए और हमारी डिफेंस के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, डिफेंस को कई नई चीजें दे रहे हैं, उनके लिए हम ग्रांट बढ़ाने के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं। मैंने थोड़ी देर सोचा और प्रपोज किया कि हमारे यूथ के लिए, स्टार्टअप्स के लिए 1.5 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5, 7 यानी 5 और 7 नहीं, अब सीधा 10 करोड़ रुपए तक का प्रोविजन कर किया गया। और मुझे कहते हुए इस बात की खुशी होती है कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने आईटेक प्राइम को लॉन्च किया है और इसमें ग्रांट बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। यह हमारे इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स की मेहनत, लगन और उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार किस प्रकार का सपोर्ट देती है, इसमें देखा जा सकता है। हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को
एडिक्वेट डिमांड एश्योरेंस मिल सके, इसके लिए हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से परचेज के लिए डिफेंस कैपिटल इक्विजिशन बजट का 75% रिजर्व कर दिया है, जो कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपया बनता है। और इस 1 लाख करोड़ का 1/4 हमने प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए अर्बार किया है, और इसमें से भी बाकायदा 1500 करोड़ हमने केवल और केवल आईडेक्स और एमएसएमई के लिए एरमार किया है। इससे लाभ यह होगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और आप हैवी इंडस्ट्री के सप्लाई चेन का भी एक पार्ट बन सकेंगे। ये सभी स्टेप्स अंततः हमारी एमएसएमई को स्ट्रेंथन करेंगे और डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेल्फ रिलायंट इस सेक्टर को बनाएंगे। साथियों, यहां मैं बार बार हैवी इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री का जिक्र कर रहा हूं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं इन दोनों में कंट्राडिक्शन देख रहा हूं। मैं अभी स्मॉल इंडस्ट्री के क्या बेनिफिट्स हैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, तो इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मैं हैवी इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस को डिनाई कर रहा हूं। मैं जानता हूं वास्तव में जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री हैं, उनके भी एक सिम्बियोटिक रिलेशन है। दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों का एग्जिस्टेंस एक दूसरे से है। और आप सब लोग तो इकोनॉमी की समझ रखने वाले लोग यहां पर आप सभी लोग बैठे हैं, आप फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अर्थात किस प्रकार बड़े उद्योग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए छोटे उद्योगों पर और छोटे उद्योग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बड़े उद्योगों पर डिपेंड करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कल को यदि आप स्मॉल इंडस्ट्री से हैवी इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ें और कल को यदि आप कोई बड़ी कंपनी के रूप में डेवलप हुए, तो आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज को भूलना नहीं है, बल्कि उन्हें भी साथ लेकर चलना है। मैं तो चाहता हूं कि आप सभी बड़े इंडस्ट्रीज बन जाएं। और साथियों, लघु उद्योग भारती एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है। कई सारे स्मॉल इंडस्ट्री के लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे मैं गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच एक ब्रिज की तरह देखता हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिज कभी 1 वे नहीं होते, वहां रास्ते 2 वे होते हैं। इसलिए मैं आपको आपके रोल को भी 2 वे देखता हूं। पहला रोल तो यह कि आप एक संस्थान के रूप में स्मॉल इंडस्ट्री की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम से सरकार को अवेयर कराएं। अर्थात यदि बिना मतलब का कोई नियम है, कोई कानून है, कोई रूल है, कुछ भी है, कागजी कार्रवाई है, मल्टी लेयर्ड क्लियरेंसेज आदि हैं, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई इशू है या इसी तरह की और कोई बात है, तो उससे आप हमें अवेयर कराएं। सरकार उन पर विचार करेगी और उनका एज फार एज पॉसिबल सलूशन भी निकालेगी, यह मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं। पर इसके साथ ही आपका एक और दूसरा रोल भी है, जिसे मैं उतना ही महत्वपूर्ण समझता हूं। वह यह, यदि इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट एंड सोसाइटी से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो गवर्नमेंट एंड सोसाइटीज को भी इंडस्ट्री से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और यही आपकी दूसरी भूमिका है कि आप एक इंडस्ट्री एसोसिएशन होने के नाते उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करें। इंडस्ट्री की रिस्पांसिबिलिटी जितनी अपनी बैलेंस शीट के प्रति होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स के प्रति होती है, उतनी ही रिस्पांसिबिलिटी समाज और राष्ट्र के प्रति भी होती है। ऐसे में आप विश्वास है, आप इंश्योर करें आप राष्ट्र को टॉप क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स दे सकें। आप अपने सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वे आपके क्लाइंट्स हों, आपके एम्प्लॉइज हों या फिर आपकी इस्टेब्लिशमेंट के आसपास स्थित कम्युनिटी, आप उनके इंटरेस्ट का पूरा ध्यान रखते ही होंगे। कहीं देखें, समय समय पर उसको रिव्यू भी करते रहें, कहीं पर कोई कमी रह गई है
उसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे। इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए क्लीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को जितना हम आगे बढ़ा सकते हैं, जितना हम बढ़ावा दे सकते हैं, हमें बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों, सोसाइटी के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात जब मैं करता हूं तो मेरा इंटेंट सिर्फ कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में अपना प्रॉफिट का कुछ अंश देने से ही नहीं है। मेरा इंटेंट इस बात से है, जिस समाज ने आप सबको इतना कुछ दिया है, उस समाज के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर से ही आनी चाहिए और उस समाज में एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन जैसी बेसिक फैसिलिटीज के डेवलपमेंट के लिए जितना हो सके उतना आपको सरकार का सहयोग करना चाहिए। यह हमारी आपसे अपेक्षा है। करते भी हैं लोग, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नहीं करते। मुझे पूरा विश्वास है कि लघु उद्योग भारती और उसके साथ जुड़ी सभी एमएसएमई इस दिशा में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर वह आगे बढ़ेंगे। मैं आपको यह भी एश्योर यहां करना चाहूंगा कि भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने की दिशा में अगर आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो सरकार 10 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसलिए आगे बढ़ने का यही समय है, आगे बढ़ने का सही समय है। मुझे विश्वास है कि आप सभी मिलकर भारत को सशक्त बनाने के सरकार के प्रयासों में अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, भविष्य में भी देते रहेंगे। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं एक बार फिर मुझे आप यहां पर इनवाइट करने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आप सभी के फ्यूचर प्लान्स में सक्सेस के लिए अपनी शुभकामनाओं के साथ अपना एड्रेस यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Well, ladies and gentlemen, the revolutionary changes in the aerospace, defense and